Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. The best way to predict your future is to create it. The best way to predict your future is to create it. सबसे बेहतरीन रास्ता, सबसे बेहतरीन तरीका टू प्रिडिक्ट, पेश गोई करने का योर फ्यूचर, अपने मुस्तकबिल की सबसे बेहतरीन तरीका है अपने मुस्तकबिल की पेश गोई करने का इज़ टू क्रिएट इट, कि उसे खुद बनाओ. डोंट डिपेंड ऑन अदर्स. इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, जस्ट डू इट. whatever you want to, just create it. Pleasure in the job puts perfection in the work. Pleasure in the job, खुशी से काम करना, खुशी से कोई भी काम करना, जो मजबूरी हो, जिम्मेदारी हो, कोई भी हो. प्लेजर इन द जॉब, नौकरी करना खुशी खुशी. पुट्स परफेक्शन इन द वर्क, वो आपके काम में परफेक्शन डाल देता है, यानी आपका काम सबसे मुनफरिद और सबसे अच्छा हो जाता है अगर वो दिल से किया जाए. कहता है कोई भी काम अगर आप दिल से करें तो वो काम बहुत ज़बरदस्त हो जाता है. इट्स फाइन टू सेलिब्रेट सक्सेस, but it is more important to heed the lessons of failure. It is fine to celebrate success. ये अच्छा है कि अपनी कामयाबी को मनाओ, ये अच्छा है कि कामयाबी को मनाना अच्छी बात है, बट लेकिन it is more important, लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम चीज़ है to heed the lessons of failure. तवज्जो दो उस सबक पर जो तुमने अपनी नाकामयाबी से सीखा. हम जब कामयाबी की तरफ जाते हैं तो हमें डबल मेहनत करनी होती है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हमें और दोबारा कामयाब, हमारे से लोगों ने उम्मीदें लगाई होती ज़्यादा कामयाब होने के लिए, तो हमें ज़्यादा मेहनत करनी होती है. और हमें अपना माजी याद रखना चाहिए जब भी हम कामयाबी की तरफ पहुँचते हैं. लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी नाकामयाबियाँ भी भूल जाते हैं और जितनी मेहनत करते हैं अगली दफ़ा उससे कम करते हैं, ये उम्मीद लगा के कि हम तो दोबारा कामयाब हो जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम नाकामयाब हो जाते हैं. कामयाब होने के लिए सबसे अहम चीज़ है कि अपने माजी को ना भूलो, अपने नाकामयाबियों को ना भूलो, जो नाकामयाबियों से सीखा उसे याद रखो. अ स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप, एक पक्की दोस्ती, एक ताकतवर दोस्ती, डज नॉट नीड डेली कन्वर्सेशन. एक पक्की दोस्ती, एक अच्छी दोस्ती को कभी ज़रूरत नहीं होती रोज़ाना बात करने की. डजंट ऑलवेज नीड टुगेदरनेस, और ये भी ज़रूरत नहीं होती कि साथ मिल के बैठे. अक्सर लोग सोचते हैं दोस्ती वो है कि जो साथ मिलना, रोज़ बातें करना. दिस इज़ नॉट अ फ्रेंडशिप. एज लॉन्ग एज द रिलेशन, जब तक द रिलेशन लिव्स इन द हार्ट, जब तक दिल में रिश्ता है, ट्रू फ्रेंड्स विल नेवर पार्ट. सच्चे दोस्त कभी अलग नहीं होते. अलग होने की निशानी क्या है? कि दिलों में मैल आ जाए. अलग होने की निशानी क्या है? दिलों में दरार आ जाए. अलग होने की निशानी क्या है? कि आपने परवाह करना छोड़ दी, आपने भरोसा करना छोड़ दिया. What do you know about true friends? If you are a true friend, if you are a good friend, so tell me, what are the qualities of a good friend? Can you tell me? No? So let me tell you. I am who I am. मैं जो भी हूँ वही मैं हूँ, यानी मैं जैसा भी हूँ, मेरे दोस्त को कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे तब्दील होना चाहिए. आई एम हु आई एम, मैं जो भी हूँ वैसा ही हूँ. लाइक मी, मुझे पसंद करो. लव मी, मुझे प्यार करो. टेक मी, मुझे लो. लीव मी, मुझे छोड़ो. चाहे मुझे लेकर लो, चाहे मुझे छोड़ दो, चाहे मुझे प्यार करो, चाहे मुझे पसंद करो. नो दैट आई एम ट्रू फ्रेंड टू द एंड. मैं आखिर तक सच्चा दोस्त रहूँगा. एंड आस्क फॉर नथिंग इन रिटर्न, और बदले में कुछ नहीं मांगूंगा. एक्सेप्ट टू थिंग्स, सिवाय दो चीज़ों के. डोंट हर्ट और यूज़ मी, मेरा दिल ना दुखाओ और मुझे इस्तेमाल मत करो.
I will give you rest. میں تمہیں آرام دوں گا. اس زندگی میں تمہیں ریلیکسیشن سکون اللہ دیتا ہے اگر تم اس کا ذکر کرو تو. اگر تم اللہ کو یاد کرو, if you remember Allah, Allah will give you rest and peace in your heart. I will strengthen you. اگر تم اسے یاد کرو تو وہ تمہیں طاقت دے گا. اگر تم سوچ رہو, if you think you are weak, so ask for Allah help. Allah will give you strength. If you ask any question, Allah will answer you. Allah will answer you for each and every prayer. اللہ تمہارے ہر سوال کی, ہر دعا کا جواب دیتا ہے, تمہاری ہر دعا سنتا ہے. I believe in you. میں تم پہ یقین رکھتا ہوں. تمہیں اتنا بھروسہ ہو, تمہیں اللہ پہ اگر یقین ہے تو وہ ضرور تمہیں دے گا. اگر تمہیں یقین نہیں تو پھر تو بات ہی نہیں بنتی نا. سب سے بڑی بات ہوتی ہے بلیو. If you have believe on it, if you believe on God, God will help you and God will provide you what you want. So first thing is believe in Allah, believe in God, کہ اللہ پہ یقین رکھو. I will bless you. جب تم اس پہ یقین کرو گے تو وہ تمہیں اپنی رحمتوں سے نوازے گا. I'm for you, وہ ہمارے لیے ہے. I will not fail you, وہ ہمیں کبھی بھی فیل نہیں کرے گا. I will provide for you, وہ ہمیں سب چیزیں کھانا پینا دیتا ہے. I will be with you, اور وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. I love you, اور وہ ہمیں پیار کرتا ہے. وہ ہمیں سکون دیتا ہے, وہ ہمیں طاقت دیتا ہے, وہ ہمارے سوالوں کو سنتا ہے, ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے. ہم پر یقین رکھتا ہے, اتنا یقین کہ میرا بندہ اگر میرے پاس آئے گا تو میں اسے معاف کر دوں گا. میرا بندہ مجھے یاد کرے گا تو میں اس کے پاس اس کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیج دوں گا. وہ رحمتیں برکتیں نازل کرتا ہے. وہ ہر جگہ ہمارے لیے ہے. وہ ہمیں کبھی مایوس نہیں کرتا, کبھی ہمیں نا امید نہیں ہونے دیتا. وہ ہمیں ہر چیز پرووائڈ کرتا ہے, کھانا پینا, عقل, سب چیزیں اس نے ہمیں دی ہے. اور وہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں. اس کا علم ہمارے ساتھ ہے. اس کے 2 فرشتے ہر وقت کچھ نہ کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں, اور وہ سب سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. He loved more than 70 mothers. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. السلام علیکم.